Hey everyone, welcome back. Welcome back to your computer classes. And kids, here we are back with our chapter personalizing Windows 7. Now, yesterday we have started revising the chapter, and yesterday we have done up to changing the background. Yesterday we have done up to changing the background. So today I'll start with positioning the picture. Today I will start our lesson with positioning the picture. Okay, now yep, let us start. Picture position. So basically there are one, two, three, four, five way to position your picture. See, if you have a picture to display, है ना, then what will happen, अगर आपके पास एक picture है display करने के लिए, then what will happen, then you will need, if you have a picture to display, then you will need to position your picture. आपको क्या जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी अपनी पिक्चर को पोजीशन करने के लिए. Okay, so let us read one by one and then we will do the practical on the same. So the first is, okay, first is fill. This option display a single copy. This option display a single copy of the image extended on all the sides and keep the ratio um, of the width to height the same. So it means that the some part of the image will cut off. That it means that some part of the image will get cut off. So now today I will download some of the picture to show you this positioning. Okay, what will happen? Today I will download some of the picture to show you the um, yeah. Today I will download some of the picture to show you all this positioning. Next is fit. This option displays a single copy of the image extended until either the width of the picture fits the width of the screen or the height of the picture fits the height of the screen. Third one is stretch. What happened? This option displays a single copy. This option displays a single copy of the image extended on all the sides. So it fills the entire desktop. Tile option, we have seen it. What will happen? It will create the multiple copies. What will happen? It will create the multiple copies of the picture, and yeah, and that multiple copies of the picture will occupy the whole of the desktop. Now next one is center. This option displays a single copy of the image in the center of the screen. Okay, great. So fill, fit, stretch, style, center. These all are the picture positioning steps. Okay. Now, so let us download some picture first. So I'm going to first of all I have to connect my laptop with the internet. Okay. See. So our net is connected. So I'm going to search. What I have to search. Mm-mm. Okay. Background images for desktop. So these all are the background images for the desktop. Okay.
background wallpaper, computer background, glitter, epic blue, animated. If we click on animated, no, I'll click on, let us see what we can download from here. Okay, beach background, because I like the seaside, so I would like to download the beach background. So let us see what happens here. So see, beautiful beach diagram, beach pictures are here. So what I will do, I will download. So I am like, I like this picture, so I will click on, yeah. So I will click on right side of my mouse, and here from here I will save image as. So I will save image as C picture. C picture. Okay, C pic. I'll save it on desktop. Save. Okay, so this picture got saved. Now I want some more picture. Um, I want some more picture. Let us see, do we have anything here? HD beach wallpaper is here. Let us see what do we get there. Okay, so I'm liking this picture, and this is also good, so I will download this picture also. So I will name this picture as night, and yeah, save this picture on the desktop. Now let us move toward our chapter. So what we have to do, I have downloaded two picture, and now what next I have to do, I have to position those picture, and I have downloaded the picture, and now what I have to do, I have to position the picture. So I will go on search option, and there I will search control panel. Going on control panel, I will go on appearance and personalization, and then taskbar navigation. Yep, going on taskbar navigation and choosing the background मैम ने चूज किया. अब यहाँ पे मैम ने क्या चूज किया, पिक्चर. ठीक है, अब पिक्चर चूज किया, तो मुझे वो पिक्चर चाहिए जो मैंने डाउनलोड की थी. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन ब्राउज पे जाके फर्स्ट आई विल चूज द सी पिक. देखो ये वही दो पिक्चर है ना जो हमने डाउनलोड की थी, तो आई विल चूज द सी पिक. चूज किया मैंने. अच्छा, अब ये पिक्चर मेरे स्क्रीन पे शायद आ गई है. अब चूज अ फिट, तो आई विल चूज फिल. चूज अ फिट में मैंने क्या चूज किया, फिल चूज किया. फिल मीन्स ये पिक्चर क्या होगी, मेरे पूरे इमेज. चलो देखते हैं, जब मैम ने फिल चूज किया तब क्या हुआ. देखो ये पिक्चर मेरे पूरी डेस्कटॉप पे आ गई है ना, फिल पे मेरे पूरे डेस्कटॉप पे ये पिक्चर आ गई है. नाउ where is the control panel, here. Now I will choose the next option, that is fit. अब फिट चूज करके क्या हुआ, देखो साइड साइड से इतनी, मतलब ये इमेज अपनी ओरिजिनल जो इसकी साइड्स थी उतने पे ही रही. चलो देखते हैं एक बार बुक में. देखो फिल में क्या हुआ, दिस ऑप्शन डिस्प्लेज सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज एक्सटेंडेड ऑन ऑल द साइड. क्या हुआ, सारे साइड में हमारी पिक्चर क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है. नेक्स्ट, and keep the ratio of the width the height to the same, so it means that the some part of the image will be cut off. तो जितनी बड़ी मेरी इमेज, जितनी बड़ी मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है उतनी बड़ी ही मेरी पिक्चर बन के आई थी, है ना, ऐसा हुआ था. अच्छा, अब फिट में क्या हुआ, आपने देखा फिट में क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे साइड साइड में ऐसे दो साइड छूट से गए थे. क्यों छूट गए थे, दिस ऑप्शन डिस्प्ले अ सिंगल कॉपी ऑफ द इमेज एक्सटेंडेड अंटिल ईदर द विड्थ ऑफ द पिक्चर फिट द विड्थ ऑफ द स्क्रीन और हाइट ऑफ द पिक्चर फिट्स द हाइट ऑफ द स्क्रीन. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्चर की हाइट मैच कर जा रही है, विड्थ नहीं मैच कर पा रही है. इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी पिक्चर यहाँ से क्रॉप हो जा रही है. हमारी पिक्चर क्या हो जा रही है, यहाँ से क्रॉप हो जा रही है. ओके ग्रेट.
Moving toward the next option. Okay, so we have done fill, we have done fit. Now the next we have to do is to stretch. ठीक है, next see stretch and fill is very much similar to each other. Stretch and fill is very much similar. So chalo let us do. Okay, so now this time I'm going to choose stretch. Let us see what change it brings. Okay, see, so stretch and fill are very much similar to each other. Okay, now next is my all-time favorite, that is tile. So see what happen if I click on tile. Tile पे click होने पे क्या हुआ देखो, it's look beautiful ना. See how beautiful it looks. Why? Because ये पूरी स्क्रीन देखो किससे फिल हो गई है. पूरी स्क्रीन किससे फिल हो गई है? पूरी स्क्रीन फिल हो गई है छोटे छोटे पिक्चर्स से, है ना. देखो पूरी स्क्रीन छोटी छोटी पिक्चर से फिल हो गई. तो टाइल में क्या होता है? टाइल में आपकी पूरी इमेज क्या होती है? छोटे छोटे पिक्चर से फिल फिल हो जाती है. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. नेक्स्ट वी आर हैविंग आफ्टर टाइल वी आर हैविंग सेंटर. अब देखो सेंटर तो हमने कई बार पहले भी प्रैक्टिस किया है, बट स्टिल सी व्हाट हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन सेंटर. क्लिकिंग ऑन सेंटर लीड्स अस टू कीपिंग द पिक्चर इन द सेंटर. देखो ये पूरी पिक्चर क्या हुई? खाली सेंटर में आ गई है ना. पूरी पिक्चर कहाँ आ गई है? खाली सेंटर में आ गई है. नाउ आफ्टर सेंटर नेक्स्ट इज स्पैन. अगेन सी स्पैन में क्या हुआ? स्पैन में भी ये पिक्चर क्या हुई? आफ्टर सेंटर ये पिक्चर पूरी तरह से क्या हो गई है? स्क्रीन पे पूरी तरह से फिल हो गई है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन. व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट पिक्चर पोजिशनिंग ऑप्शन. Fill, fit, stretch, tile, center. These are the different picture positioning option. Now I'm going to choose the next picture that we have downloaded. So I'll go on picture. I'll click on browse. Browse पे जाएंगे और this time I'm going to choose CPIC. So I will choose CPIC. Now let us see what happened. अच्छा CPIC तो we have already choose ना. This time I'm going to choose night. Yeah, I'm going to choose night and let's see what happens. How my screen is looking right now. Yeah, see this is how my screen is looking right now. है ना. ये मैंने क्या किया? अपना बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर दिया. Okay. Now moving toward the chapter. Okay, next we are having setting the screensaver. So the next topic that we have to do is to read the screensaver. Setting the screensaver. What is screensaver? The screensaver is the moving picture. The screensaver is what? Screensaver is moving picture that appears automatically on your computer if you do not use your computer for a period of time. So what happens if we do not use our computer for a period of time? So what will happen if we do not use our computer for a period of time? Screensaver will appear automatically on the desktop. To bring back your desktop again, just move your mouse or press any key. Okay, let us read how to set the screensaver. Let us read how to set the screensaver. First we are having open the personalization window. Second, click on the screensaver.
Now next is the screensaver setting dialog box appears. Next is click on the down arrow of the screensaver. Click on the down arrow of the screensaver. Click on the screensaver you want to use. A preview of the screensaver appear. Next what happened? A preview of the screensaver. Preview means how screensaver will look that will appear on the screen. Next. Note, all the screensaver cannot be displayed in the small preview. To see the actual preview, click on the preview. After this, move the mouse pointer or press key to stop the preview. After this, what you should do? After this, you should move the mouse pointer. Okay. Moving ahead. Part 5 is click on wait. Up and down arrow to specify the number of minutes. Here it is given wait. Means for how long we have to wait before installing the before keeping the screensaver. How long computer should wait. Next is click on OK. So let us practice it. So what we will do, we will go on start option and I will search here screensaver. Screensaver. Okay, so click on open. So see, this is screensaver box appears, screensaver dialog box appear और देखो ये कितना ओरिजिनल दिख रहा है ना, जैसा हमारा this box is looking similarly this box is also looking है ना, कहाँ गया इधर. Okay, now what we have to do, we have to change the screensaver. So let us change. So first is 3D text. So let us click on 3D text. Then setting में क्या है भाई, custom text. So what we can do from here, we can change the text. So here I will type it computer. तो मुझे चाहिए कि मेरे स्क्रीन पे कंप्यूटर दिखे. What I can do, I can choose the font also. I can choose the font also, है ना. So I will choose bold and then I will choose this script and I will click on OK button. Then I will click on OK button. ठीक है, OK click किया. Size is large. Now rotation type. Here they are asking what rotation type do I want. So I will click it say wobble. Let us see what happen when we click on wobble and click on OK button. See what happened. This is wobbling. Now I will click on preview. अब preview पे देखो. Ouch. See. प्रीव्यू देखिए, दिस इज हाउ इट सीम्स. दिख रहा है, हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, तो देखो अब ये कैसा दिख रहा है. दिस इज द प्रीव्यू. ओके, नाउ अब इसे हमें अगर हटाना है अपनी स्क्रीन से, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रेस एनी की. तो आई हैव प्रेस द एंटर की एंड सी क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट 3D टेक्स्ट तो हमने देख लिया. नेक्स्ट लेट अस क्लिक ऑन बबल्स. ठीक है, बबल्स के साथ भी बगल में सेटिंग गिवन है. दिस किस हैव नो ऑप्शन दैट यू कैन सेट. ओके, सो नाउ फॉर बबल्स वी कैन नॉट सेट एनीथिंग, है ना, बट वी कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑप्शन. सो सी प्रीव्यू पे क्या हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग बबल्स, है ना. ओके,
Okay, so we were seeing the bubble. Okay, so let us get the preview. So this is how bubbles screensaver looks like. है ना, देखो हमारे पूरे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, है ना. तो यू कैन ऑल्सो डू इट. ठीक है, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे. स्क्रीन सेवर सेटिंग में सारे बच्चे इस चीज को ट्राई करेंगे. नाउ व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू? चलो लेट अस डू द नेक्स्ट. After bubble we have mystify. Let us see what is mystify. Can we change the setting? We cannot change the setting. So mystify, let us get the preview. अब देखो mystify is something that looks like this. Mystify looks like this. Okay, great. तो अगर अब मुझे इसे हटाना है तो what I have to do? I just have to move my mouse cursor. है ना, देखो this is mystify. Next we are having photos. So photos, now I can browse photo also. तो चलो मैं एक बार अपने जो पिक्चर हमने डाउनलोड की थी, let us take photos from there. Desktop, where is desktop? I'm not getting any photos here. Okay, clicking, I will click on this PC and then desktop. And यहाँ पे हमने photos ली थी ना, let us see. हमने photo तो ली थी, but I'm not getting those photo here. I'm not getting any photos here. Not this PC, but desktop. Okay, see download. Do we have anything here? We don't have any pictures here also. Let us see, do we get anything here? No. And let us click it, screenshot. Okay, so leave it. So if we want to set picture, we can browse it from here. Right now I am not having any picture to set it on the, yeah, I don't have any picture to set it as the screensaver, but we can do it. Now slideshow speed, we can do it fast also, है ना. फास्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेव इट. अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो क्या हो रहा है, सी प्रीव्यू में ये जो पिक्चर है ये अपीयर हो रही है फिर से. लेट अस सी, दिस इज द प्रीव्यू ऑप्शन. ओके, now see here, weight option is given here. Weight option, under the weight option what we can do? Okay, under the weight option what can be done, what can we do? यहाँ पे देखो 10 minutes is given, so we can reduce it. We can reduce it 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और we can increase it also. See यहाँ पे हमने 10 मिनट 15 मिनट इसे कर दिया, और what we can do, है ना, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया. सो नेक्स्ट आई व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन ओके. आई विल क्लिक ऑन ओके बटन. Okay, now great. So we have done this. We have done the screensaver also and the background image also. We have learned how to change the both. Now the changing the color scheme. Let us do. Let us change the color scheme. Okay. So let us. I am going to read it first.
You can personalize Windows by choosing a different color scheme. Windows applies color scheme to the Windows border, taskbar and start menu. First is open the personalization window. Click on window color. Then window color and appearance window will appear. Next, click on the color you want to use. Now next what we have to do? Next we have to click on the color that we want to use. Next, Windows immediately change the color of the Windows border. Window will immediately change the color of the window border. Window border का color window क्या करेगा? तुरंत से change कर देगा. Okay, great. To set the color intensity, click and drag the color intensity slider. To change the color intensity, we can drag the color intensity slider. And then finally, what we can do? We can save the changes. So let us open the, yeah, and where it is. Okay, so let us search it all over again. Okay, so we'll go on color. So let us set the color. So what we will do? I like to keep it dark. देखो dark पे कैसा दिख रहा है ना? If I click on light पे click करके and choose your default app mode. If I click on light, I will get some color to fill. यहाँ पे क्या होगा? मुझे color मिलेंगे fill करने के लिए. Okay. So let us see. I will choose say this color. I'll choose orange dark. ठीक है? अब what changes it will bring? See. अब आप देख सकते हो यहाँ जो मेरा टाइटल बार है इट इज ऑल ऑरेंज डार्क है ना. ये भी किस कलर में हमें नजर आ रहा है? ये हमें किस कलर में नजर आ रहा है? ऑरेंज डार्क कलर का हमें हमारा टाइटल बार भी नजर आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी चेंज द कलर इंटेंसिटी. कलर इंटेंसिटी हम इस तरह से चेंज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अप्लाइंग थीम. जैसे हमने कलर चेंज किया, बैकग्राउंड इमेज चेंज किया, सिमिलरली वी कैन चेंज द थीम ऑल्सो. सिमिलरली वी कैन चेंज द theme also. Okay, instead of setting instead of setting the background desktop background, screensaver and color scheme individually, you can change all these at once. So theme change करके we can change all of these at once. हम ये सारी चीज एक साथ कर सकते हैं. Now it includes desktop, changing the desktop icon, sound effect and mouse pointer. We can change all of them. To change the सारी चीजें अलग अलग करने से अच्छा है we can change the desktop theme change करके we can do all of these things. So kids, today we have done up to changing the screensaver and changing the color. Now in our next class we will start with changing the or applying the theme. We will start from here. Till then, goodbye.